have with us Harpreet Suri, also known as Mom Wears Prada, and most importantly, I think a passionate advocate for mindful parenting. This was all planned. It's all planned. All unplannedly planned. A time when you felt vulnerable or scared to share something on social media but did it anyway. I was scared. I didn't know what to do. This is exactly what is happening in my life right now. Why should I showcase that I am very happy? I'm not happy. I'm sad. I'm crying. This is most true to me right now. और मुझे ऐसी बहुत लड़कियां होंगी तो मैं उनको भी करेज देना चाह रही थी. आपका जो स्ट्रेंथ है ना, कोई कुछ भी बोले, बी एट इट. हमें इस बात पे यकीन भी करना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है ना, उसका एक प्लान चल रहा है और हमें उस प्लान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. इफ्स एंड बट्स नहीं करने चाहिए ज़्यादा. सो व्हाट कम्स टू यू, fold hands and take it, and what doesn't come to you, उसके लिए डबल शुक्रिया है. Let it flow. सब कुछ एंड में ना सब इकट्ठा हो जाता है. From being into a corporate job to now handling and juggling roles between that of a mom and a mom influencer. Today on Unplanned Life with me, Ambika Singh Kama, we have a special guest. Let me introduce, we have with us Harpreet Suri, a loving mom, a vivacious personality, very popular influencer, and she's also known as Mom Wears Prada, and most importantly, I think a passionate advocate for mindful parenting. Harpreet, it's really a pleasure to have you with us on Unplanned Life on NDTV. Thank you. Thank you so much. So Harpreet, after working in the corporate sector for 16 years, and then your transition, of course, you became a mom. The best thing I think is mothers is the best gift, becoming a mom, of course, and then an influencer. So take us through your journey. I'm sure viewers will be very excited to know कि corporate job से अब आप influencer बन गए. मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट जॉब में थी. आई वॉज डूइंग PR फॉर डिफरेंट ब्रांड्स और वो मेरी फेवरेट जॉब थी. वो मुझे लगता था मैंने सब कुछ अचीव कर लिया. मतलब अब तो आई हैव कम टू दैट एंड अवार्ड्स भी बड़े मिल गए. बड़ा मज़ा आ रहा था जो मैं कर रही थी. एंड आफ्टर अ पॉइंट आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि अब ना मैं ना कुछ और सीख रही हूँ ना सिखा पा रही हूँ. PR की जॉब बड़ी इंटरेस्टिंग होती है. एज जर्नलिस्ट आई एम श्योर यू सीन द अदर साइड ऑल्सो विद अस. एवरी डे देयर समथिंग न्यूज़, कुछ नया खुल रहा है. और समय रिटेल इंडिया में बूम पे था एंड आई वाज विद सिलेक्ट सिटी वॉक. एक ब्रांड अपने हाथ से खोला, एक मीडिया को बुलाना. और ना इन दैट होल फेज आई स्टार्टेड सीइंग इन्फ्लुएंसर्स. तब हम ब्लॉगर्स बोलते थे क्लियरली. तो बहुत सारे ब्लॉगर्स वो कमिंग एंड आई वाज इनवाइटिंग देम. तो मुझे लगा यार ये तो बड़ी इंटरेस्टिंग जॉब है. आई ऑलवेज लुक्ड अप टू देम. बट मुझे बहुत लोगों ने बोला तू भी ना इन्फ्लुएंसर बन जा. एंड आई यूज्ड टू ऑलवेज से आई हैव नथिंग टू टीच. मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है ना. मतलब आई लव डूइंग फैशन, बट वो मेरा फैशन था. आई नेवर फेल्ट कि मैं एक फैशनिस्टा बन सकती हूँ. या मेकअप में भी मेरा हाथ बहुत टाइट था. मुझे याद है जब मेरी शादी हुई थी, माई सिस्टर लॉ यूज्ड टू लाफ एट मी कि व्हाट मंकी मेकअप यू डू. मैं इतनी बुरी थी मतलब. बट आई वॉन्टेड टू लर्न. मेरे अंदर सीखने की बहुत चाह है. So you had that thing from inside कि I want to do something different and always. एंड फिर आई गॉट प्रेगनेंट. तब मुझे याद है वो किया था एक प्रेगनेंसी फोटोशूट. और एक नहीं दो किए विद अरहान. अ लॉट ऑफ पीपल इन माई ओन सर्कल टोल्ड मी ऑन दैट हमारे इंडिया में तो ये सब नहीं होता है. पर मैं शुरू से ही बहुत आगे सोचती हूँ, पता नहीं क्यों. And now it's the in thing. Imagine. So with second one, Ayat, Kareena Kapoor and I did our pregnancy shoot almost similar. And my friends used to laugh कि now see Kareena Kapoor is also following. Of course not, she had her own plan. तो मुझे कहीं ना कहीं लगने लगा था कि यार मेरा दिमाग थोड़ा अच्छा चलता है, मुझे इसको यूज़ करना चाहिए. एंड while I was just at the edge of leaving my job and getting into motherhood, I decided to start writing. अब मानेंगे मेरी राइटिंग पे मुझे बहुत फ्लैट मिला है मेरी लाइफ में. Nobody has appreciated in my companies that I've worked with. Nobody appreciated my writing. They all just felt कि क्या लिखती है कहानियाँ, पर मुझे वही आता था. और ये बात मैं सबको बोलती हूँ कि आपका जो स्ट्रेंथ है ना, कोई कुछ भी बोले, be at it. And you know your strength, yeah. And today when I write, people just tell me one thing, that we start crying when we listen to you. The way you write, the way you share your story. Imagine जिसकी कोई वजूद नहीं था, जिसको लोग बोलते थे what have you written? And so anyways, I left my job and I started writing and doing my own thing on the gram. तब Instagram नया आया था. तो right timing भी बिल्कुल सही थी. बिल्कुल right time. तो अब मतलब आज पीछे मुड़ के देखती हूँ तो सोचती हूँ oh my God, God had all this plan for me. हमें इस बात पे यकीन भी करना चाहिए कि जो हमारे साथ हो रहा है ना, उसका एक प्लान चल रहा है और हमें उस प्लान को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. इफ्स एंड बट्स नहीं करने चाहिए ज़्यादा. एनीवेज आई स्टार्टेड राइटिंग एंड मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिलना शुरू हुआ. मेरे फ्रेंड्स मुझसे ना, तो मैं एक एग्नी आंट हूँ अपने ग्रुप की. वे पीपल कम टू मी, हाँ कि अब क्या करना चाहिए, अब क्या करें, अब ये हो गया है. तो मैंने उस स्ट्रेंथ को यूज़ किया एंड आई स्टार्टेड शेयरिंग माई जर्नी कि मैं एंड स्पेशली माई फेलियर्स कि मैं कहाँ फंसती हूँ एज अ मदर. प्रेगनेंसी में क्या डिफ़िकल्टीज आ रही हैं, जो भी सब मेरे दिल में था. एंड इट पिक्ड अप.
And what you were sharing, I mean, so obviously helping people was, I think, maybe a motivation ki you thought ki I let me share built a my- community जो And मुझे how realize tough ही and नहीं how हुआ. tough was it, Harpreet, to actually put out your stories out there? मेरे को नहीं कभी भी डिफिकल्ट लगा, आज भी नहीं लगता. I So share- आप बस अपनी कहानी डालते हैं. हाँ, It's मुझे not- मैं ना इसको ऐसे नहीं सोचती हूँ. मेरे लिए ना एक Instagram is like a diary. Like I'm writing my diary. I see it like that. अब इसमें तो मुझे तो पता नहीं ना कितने लोग वहाँ देख रहे हैं, वो कितने सारे लोग हैं. मुझे लोग मिलते हैं हॉस्पिटल्स में या मॉल्स में, जहाँ भी, एयरपोर्ट्स पे. So people say, oh my God, you know, it's Mom Vs Prada. And I'm like, अच्छा आप भी देख, okay, आप भी देख रहे थे. Oh how nice. मुझे तो मैं कैलकुलेशन नहीं करती यार. कि मैं कौन बड़ी देख रहा है. बड़ी अच्छा, आपने innocently कहा अपना Mom काम. Wears Prada, वो नाम, what was, I mean, it's a very cool name, very funky name, very catchy name, let me put it that way. और जब आपने रखा भी था, I mean, it was, गाने आए थे पंजाबी के बहुत सारे, you know, when it comes to all these brands, I shouldn't be singing, of course, here, because I don't sing really well, so I can't even say bathroom singing. पर वो नाम, how did you think of Mom Wears Prada? यार मुझसे ना सब लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि इसकी बड़ी एक फिल्मी स्टोरी होगी. आई वॉज सिटिंग विद माई फ्रेंड इन बिक्चल, एंड बिक्चल में वो पुराने पुराने पोस्टर्स हैं ना बड़े सारे. मैं तो एक नाम ढूंढ रही थी अपने लिए. माई फ्रेंड टोल्ड मी, यू नो, ये ना ये बहुत मॉम पॉप से शुरू हुआ था. लाइक माई फ्रेंड टोल्ड मी, तू ना इसका पेज बना ले, तो एक ब्लॉग खोल ले, यू नो, दिस विल बी राइट वे. और हमने कोई स्ट्रैटेजी, कोई कुछ नहीं था, मतलब इनोसेंटली, यू नो, इस काम को शुरू किया. सर अच्छा नाम होना चाहिए, अच्छा नाम सोचते हैं. अब मैंने ना बहुत सारे लोगों के मैंने हैंडल्स पेजेस देखे. मुझे लगा अगेन आई रियली डाउटेड माई सेल्फ ऑल द टाइम कि मैं क्या ही नाम रख सकती हूँ. मेरा तो इतना भी दिमाग नहीं चलता. मुझे लगता था कि मैं कोई नाम सोच सकती हूँ. और बहुत अलग सा नाम है. I mean, And I saw this poster, Devil Wears Prada. And that's when I felt, you know, why should Devil wear Prada? Mom can also wear a Prada, and I love Prada. That's how this name just came by. and it's a very cool name, honestly. It's really cool I had name. no, मुझे लगता है जो चीज़ आप सबसे innocent और unintentionally सोचते हो ना कि सिर्फ good intention डालते हो और कोई ऐसी intention नहीं होती कि मुझे उसको popular करना है, वो चीज़ें बहुत चलती हैं. कोई कुछ भी आप दिल से करो. I think the it connect, was you know, straight it really from my comes heart. from It the just heart. clicked. Yeah. That's the poster. No, I also believe in the same thing. But you know, as a mom, I think हमारे बच्चे more or less same age के हैं. You know, I mean, very often वो guilt feeling आती है. You know, when you, whether it's working, you also travel for work. How do you balance doing your work? I mean, even if it's, I mean, today Instagram, the guilt feeling and also everything at home, you do it so well because of course I see it through your stories. How do you balance that? And most importantly, the guilt feeling कि आपको भी होती है कि like most moms. दो तीन थॉट्स हैं मेरी इस पे. एक गिल्ट फॉर व्हाट. लाइक माई हस्बैंड ऑलवेज सेज व्हेन आई गो थ्रू दिस, इफ आई डू, ही ऑलवेज टेल्स मी कि तू कहीं पार्टी थोड़ा ना करने गई है. लाइक इफ आई एम ट्रैवलिंग फॉर वर्क, ही सेज यू आर ट्राइंग टू मेक योर ओन मार्क. अगर इतना अलाउड है या मैं कर सकता हूँ तो तू क्यों नहीं कर सकती. विच इज़ अ ब्यूटीफुल थॉट ऑफ रिलीजिंग मी. फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं बड़ी रिलीज हो जाती हूँ. स्टार्टिंग में होता था, फिर मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगा धीरे धीरे कि ना मेरे बच्चे ना बहुत यश करते हैं मेरे ऊपर. तो मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज़ होने लगा कि ये बच्चे कितने यश करेंगे जब बड़े हो जाएंगे. कि ना मेरी मॉम, जैसे मैं अपने फादर के लिए बोलती हूँ, feeling माय proud, फादर. yeah. So I turned that guilt into that feeling. कि they are going to be very very proud of me, especially my daughter. I feel because I want her to see me as a working woman, and you know I want her to do similar stuff. तो मुझे लगता है कि गिल्ट तो नहीं होना चाहिए क्योंकि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और आई डोंट गो टू पार्टीज, तो मुझे ये वाला गिल्ट तो है ही नहीं कि मैं रात को ये सब कर रही हूँ. आई एम very focused with what I'm doing, and I'm setting an example for my children, I feel. Sure, I think that's very well put and very well thought of, and of course you have a supportive husband, so let's. Everything, you know, you are what you are because of your family that supports you. So my husband has the biggest role, and I want to say it very openly. ये सच है यार, मैंने बहुत कुछ किया है, पर अगर वो मेरे साथ नहीं खड़ा होता या मेरी मदर-in-law मेरे साथ नहीं खड़ी हैं, तो नहीं हूँ यार, मैं कुछ भी नहीं हूँ. I think that's a fact. I think family plays a very important role. जब हम बड़े हो रहे होते हैं, it's our parents, right? And you said, of course, for your son as well. लेकिन even for your daughter, like how has it been? Like when you bringing up your daughter, times have changed, society has changed, values have changed a bit. आपकी upbringing में, and how different is that from what you were brought up and how you're bringing up your daughter today? मैं exactly वही कर रही हूँ जो मेरे डैड ने मेरे साथ किया है. He has never put any societal pressures on me. I was always the most beautiful girl for him. He always said, "You are my Indira Gandhi. You know, you are going to do something very big in life." उन्होंने मुझे इतना motivate किया है ना हमेशा से. And he manifested that. Yeah, उस he time did. manifestation की बात नहीं होती थी. आपको पता है मेरे डैड ने मुझे लेटर्स टू इंदिरा दिए थे जो जवाहरलाल नेहरू ने अपनी डॉटर को दिए. उन्होंने मुझसे वो बुक ला के दी मुझे कि इसको पढ़ो. At that point of time in grade 11th, he got me Cosmopolitan. उन लोगों ना जब मैं 11th में आई उन्होंने मुझे सारे वो लगवा. I think मैं 16 की हुई थी उस समय. He got me सब magazines के subscriptions. It's very big back then. Yeah. I'm doing exactly same with my daughter. अब मानो कि मेरी बेटी अपने hair cut खुद करती है. She's just 8. Wow. So when she goes to a salon, she doesn't like the stylist cutting her hair. So she has her own style. हाँ, so she has her own thing and everybody in the salon is watching her.
I never stop her, and I've never stopped my daughter to try something different. Because मुझे लगता है Because you were never stopped, right? That's what never. you, yeah. So I I think have that lived my also life gives, एक बहुत ही different way में. तो मैं उसको भी वही देना चाहती हूँ कि तू सारे पल सारे पर खोल दे और जी ले. मतलब तो जो however. आपने अपनी जिंदगी जी है, that's what you want. Okay, now again in a woman's life, of course, motherhood की बात हुई. We've spoken about work, and I'm going to go back again a little bit. I want to ask you about your social media. How do you deal with negative criticism? But I want to ask you, which again, looking at your posts, Harpreet, मैं देखती हूँ you give a lot of, and you rightly said, like मेरी mother-in-law नहीं होंगे, husband नहीं होंगे. Again, at this age, when we are in our 40s or whatever, everything comes together. बच्चे बड़े हो रहे होते हैं, उनकी पढ़ाई, उनके peer pressure, their challenges, and I face it, right, with an interior-year-old and a 14-year-old, and then also in-laws. Now, आप बहुत अपने mother-in-law के बारे में बोलते हैं that she's amazing, or you speak about your, how difficult was it then? Because I would say I'm blessed. I have a lovely mother-in-law, lovely in-laws, so जिन्होंने हमें खुले हाथों से accept किया, right? But tell us about that, because you also put that, and not too many people put it out there in the open. जब मेरी शादी हुई थी, right before I met my in-laws first time, I told my husband this. I said, if your parents don't accept me the way I am, क्योंकि मैं एक normal सी लड़की नहीं हूँ, मुझे पता है मेरे अंदर बहुत zest है, और I'll tell you how it happened. So I told him that if your parents will not accept me the way I am not going to get married to you, because I'm going to be marrying your parents also, not just you. It was a love marriage, but fully arranged. Like they saw patri, like it's a proper Punjabi family joint setup. You know how it works. So, but ये आपका criteria था that you're marrying into the family. You're not marrying an individual. Everybody has to accept me, and my husband is also like that. उसने मुझे वो बड़ा smart है. उसने मुझे ना अपने पूरी family से मिलाया. पहले भाभीयों से मिलाया, फिर भाइयों से मिलाया. धीरे धीरे, it's like we live in a huge setup. तो उसने सबसे मिलाया, पत्रियाँ भी मिलवाई, सब कुछ जब set हो गया, then he made me meet his mom, dad. And then I met mom, dad, and मैं working थी. और एक डिफरेंट सेटअप से आती थी. आई वाज अ न्यूक्लियर फैमिली गर्ल, डिसीजंस खुद लेने हैं. दिस वाज अ वेरी डिफरेंट सेटअप बिकॉज इट्स अ जॉइंट फैमिली एंड माय फादर इन लॉ वाज द यंगेस्ट सन, सो और कुणाल बिकम्स यंगेस्ट देन, एंड आई एम द यंगेस्ट डॉटर इन लॉ. तो बहुत सारे डिसीजंस आप खुद नहीं, बड़ी सारी चीज़ें थी. सो जब वो देखने वेखने आए, सो दे सेड कि आप जॉब नहीं, हमारे घर में अलाउड नहीं है, आप जॉब नहीं कर सकते. सो आई टू लीव माई जॉब. एंड मैं तो ऐसे रेडी थी, मैंने कहा हाँ, आई लव कुणाल सो मच, आप जो बोलोगे मैं कर लूँगी. That time also we were totally in love, yeah. Totally in love. And I was, we are school sweethearts. So he's always liked me since school. तो वो एक ना, it's like finally we're getting married वाला. Yeah. And so my grandmother at that time, imagine सब बैठे हैं और ऐसी conversation हो रही है, and my grandmother tells them that ये इसका अपना फैसला होगा, if she would like to leave or not. We are not going to tell our daughter anything. And they also said, my grandmother said, we've not taught our daughter how to cook. She's a very well-educated girl. She'll be very good in decision makings in your house, but वो खाना नहीं बनाना चाहती. And it was honest, yeah. Very honest. मतलब, लोग छुपाते हैं. And they said everything, my pluses and minuses. Yeah. Very, very clearly. कि हम आपसे कुछ छुपाना नहीं चाहते. Yeah. उसके ये हैबिट्स हैं, वो ऐसे लाइफस्टाइल उसका जो भी है. And the way you've been brought up, I mean, you just put it out there. Such my parents have never hidden. And my in-laws were very, very nice, but they only had one condition, that she will not be working, because that's not a setup of our house. I got married, I was sitting at home, I was doing nothing, I was just managing stuff. And I don't know if it's the right place to say or not, but I want to tell a lot of girls, who are getting married. The one advice my father and my bua gave me was, अब जा रहे हो तो पूरे तन मन से उनकी सेवा करना. वो बोलेंगे दिन है तो दिन होगा, और वो बोलेंगे रात है तो रात है बेटा. अपनी तरफ से कोई कमी मत रखना. एंड इफ़ यू गिव इन ऑल ऑफ यू, दे विल गिव इन ऑल ऑफ देयर्स, बट यू विल हैव टू डू इट एंड विद फुल हार्ट. एंड माई बुआ सेड, माई फादर सेड एक्चुअली, ही सेड अपनी माँ दी जुतियाँ खांदी है ना, तो कितनी खुश रहती है, सॉरी भी बोल देती है, मम्मी भी करती है, तो अपनी सास को भी, हाँ, सस भी खा ली, एंड treat her like your own mother. So the right, I think, even what parents teach you, like you rightly said, our story is so similar. So when my husband and I, like Paraman, we also was a love marriage, and I was working, I went for the Cricket World Cup in 2003. My career was at its peak, and then his work is in Bengal in an interior near Jalpaiguri, so I knew I couldn't work.
एंड ऑफ कोर्स लाइक योर्स पेरेंट्स सब कुछ हुआ, सदारों में पथरी नहीं होती बट वी मिलाउड, यू नो, कि आ साइड, they did. हाँ, सो बट मेरे पेरेंट्स को था मिलानी है, एंड आई गेट मैरिड एंड फॉर 10 years I took a sabbatical in my career, but I never begrudged it because I was totally in love, oh हाँ, but then now when I look back it was meant to happen, it was totally कि वो now by then बच्चे हुए, you know, and by then it also like you said you give everything to your in-laws. I never cribbed or I never begrudged because that was a decision I took. Yeah. And you have So to I think honor it's so it. similar, and you have to write and you have to honor it and the right thing. And Harpreet, that's why I think our podcast is called Unplanned Life. You probably, if you were still in a corporate job, maybe today you wouldn't have so many followers, or you would just be doing the 9 to 5. Absolutely. This was all planned. It's all planned. All unplannedly planned. You know Yes. how we So say that's why it fits in. That's why you fit in so well. That's what I was like, okay, I have to like get you as a guest for our podcast. Okay, but just coming back, Harpreet, to social media. How do you handle the negative criticism? You know, feedback. People can be mean, and people are mean. But do you ever get that kind of मुझे still? बहुत touch wood, God is kind, बहुत कम. I'll tell you why also. मैं कोई झंडे लेके नहीं खड़ी हो जाती कुछ करने. मुझे कोई शौक नहीं है किसी को पिंच करने का या कोई ऐसा कमेंट या ऐसी कोई चीज़ कर. आई वॉन्ट वेरी हैप्पी सिंपल लाइफ. मैं इंस्टाग्राम पे एक ऐप है मेरे लिए जिसमें मैं अपनी डायरी की तरह लाइफ को शेयर करती हूँ. I never wanted to be in that sexy babe kind of category. I was very clear. You know, you never forget where you come from, what lineage you have with you. I have 2 children. I have my in-laws and I have a beautiful joint family setup. मुझे कुछ भी ना ख़राब नहीं करना है. मैं बहुत कंफर्टेबल एक अच्छी हैप्पी लाइफ चाहती हूँ. तो मुझे लगा कि मुझे किस बारे में बात करनी चाहिए. मैंने बहुत सोचा कि मुझे क्या सिखाना आता है, मैं क्या कर सकती हूँ. That's when I thought मुझे जीना आता है. मैं जीना सिखाऊंगी सबको. यू नो व्हाट इज़ द राइट वे टू डू दिस, हाउ टू से हैप्पी एंड यू नो इन योर ओन जोन ऑलवेज. तो उस वाले कंटेंट में आई थिंक इतना ज़्यादा ट्रोलिंग है नहीं. तो so आप there is no thin line between personal and professional, like when it comes to putting out your stuff there, because you're just putting out हाँ, your मेरा life. कुछ डिफरेंस ही नहीं है. मेरा ऐसे ही है बस. इट्स एग्जैक्टली हाउ आई लिव माई लाइफ. आई हैव नॉट एंड यू नो पीपल, बहुत लोग ये पूछते हैं मेरे आसपास के लोगों से कि क्या वो असली में ऐसी है. बस एक ये क्वेश्चन है जो आई हियर अ लॉट फ्रॉम, यू नो, Is that her real self, what she's putting You know, out my there? architect the other day was telling me, my interior design, we're building a new house, and she's telling me, everybody who knows, you know, I know you, they always ask one thing: how is she when she comes for meeting? And she's like, she's crazy. She's just a vibe. You know, she'll walk in. This is how I am. You know, I came, I spoke to everybody. That's how it is, and life is very easy. Yeah, there's no like. हाँ, मुझे कुछ सोचना ही नहीं है कि मुझे इसके सामने ऐसे behave करना है, इसके सामने ऐसा है ही नहीं. तो And you can't be double-faced all your life. At a lot some of people point, are. I meet a lot of people on. that's also a knack, I feel. यार मैं कई लोगों को मिलती हूँ, मुझे कई बार लगता है कि oh my god, I knew the other side of this person. Yeah. And ये सब लोग करते हैं stress में. You know, when there's a stressful situation, people just change. And how do you get out of that? And then you want to, yeah. They showcase something else and something else happens, and I find it very weird. तो मुझे लगता है ये ना again my dad has taught me that झूठ बोलना नहीं. तो झूठ बोलने के लिए 4 बातें और झूठ बोलनी नहीं पड़ेंगी. कितनी easy है ना चीज़. One lie leads to so many lies. Yeah. So मुझे करना ही नहीं है, तो मैं अगर सच ही बोलूँगी तो मुझे याद नहीं रखना पड़ेगा. You know, through our conversation, Harpreet, of course, I've asked you about your relationships, that how beautifully you manage them. I think all of us see that through your posts. And like you rightly said, it's nothing fake. It's there, what it is. And bar you're saying about your parents, what your dad has taught you. And I know it's been a tough time, you know, for you. But the way you're standing like a rock, like we have 3 sisters, right? So when I see if any of our parents, and we would do the same for our in-laws. It's both ways. But you know, hats off to the way you are doing it. I think it inspires so many girls. Because पुराने ज़माने में होता था अच्छा लड़का करेगा, right? But I think somewhere we need to break that myth. I mean, whether we talk about gender, whether we talk about, it's high time, right? आपको पता है मैंने एक पोस्ट की थी पीछे और मैंने उसमें लिखा था कि मुझे भगवान मत बनाओ. ये बेसिक है. मतलब मुझे I have got most beautiful letters, you know, on my DM. People have written such nice stuff to me for doing this. But if not That's me, your duty. who? Yeah, मतलब ये तो मेरा काम है ना as a daughter. As a फर्ज है, exactly. मतलब मैंने मुझे इस बात को इतना बड़ा मैंने जब ये शेयर किया था ना, मैं पहले 10 दिन तो बिल्कुल ही the moment I got to know my dad has been detected with cancer, I just went blank and I just didn't know what to do next. What's life like now? Because we were in a very different zone of life. And my dad is so full of life that I don't know what to do with him now. How do I break it to him? Then it took me 10 days to come out and जब मैंने ये बोला था ना, जब मैंने बताया था कि तो वो मैं अपनी डायरी ही लिख रही थी. मैं वही कर रही थी कि नो दिस हैज हैपेंड नाउ, whatever next. मुझे वो शेयर करते हुए एक बार रियलाइज़ हुई कि ये तो हर घर में हो रहा है यार.
so many families are dealing with cancer. You know, I built this whole community around me of daughters. Either their parents were ill, either they have not spent time with their parents. My post made them feel so guilty, made them realize, gave them a realization. ऐसी बहुत सारी चीज़ें हुई. तो मुझे लगा अच्छा ये तो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके बारे में मुझे बात करनी चाहिए. एंड आई और जो लोग नहीं बात कर पाते. हाँ बहुत लोग नहीं कर पाते. I mean that's something मुझे अंदर कितने रह लोगों ने जाती है. बोला कि आई थॉट इट्स माई ब्रदर, ही वॉज सपोज टू डू दिस. Or, oh my God, you know, I got so busy with my life. And I know how many, hundreds and hundreds and hundreds, that women felt that, oh, we got so busy with our lives that we forgot about our parents. So I felt this is a purpose that I have been given, and I just take it like that. कि I have to tell every girl that you gotta go out and do it, and it's no big deal. मैं फिर से बात बोलूँगी कि मुझे समझ नहीं आता, मुझे लोगों ने इतना पेडेस्टल पे चढ़ा दिया इसके लिए. ना आई वाज लाइक ये तो बेसिक था यार. मेरे डैड ने, आपको पता है, मेरे डैड जब मुझे ये बात बोलते हैं, माई डैड रियली रियली अप्रिशिएट्स मी फॉर दिस, एंड ही ऑलवेज टेल मी तूने मेरे लिए जो भी मुझे बोलते हैं ना, आई ऑलवेज टेल हिम. मैं बहुत छोटी थी, मेरी ना ये फिंगर कटी हुई है. हम लोग वैष्णो देवी गए और वहाँ पे मैंने अपना हाथ डाल दिया एक सीमेंट की किसी मशीन में, मेरी उंगली कट गई. माई डैड डिडंट रेस्ट until he got my finger stitched. उन्होंने मुझे ऐसे रखा हुआ था and he went doctor to doctor, doctor to doctor just to get my finger stitched. उन्होंने मेरा साथ नहीं छोड़ा यार, तो मैं कैसे छोड़ सकती हूँ? It's Yeah, that's the connect, and you know, but I think even for you to put it out here, to talk about it, I mean, like you said, busy हो जाते हैं बच्चे, but to actually be doing it, and of course, I think huge credit goes again to your husband, your in-laws, to actually support you for that. And I'm sure your dad, I mean, the healing, the vibes which children can give, nobody else can do that. Yeah. When my dad came out of the ICU, actually he was in ICU. So when my dad was in ICU, I remember I broke down. I was holding up. I couldn't see Papa like that. You know, we can't see our parents in us with all tubes and all going around. And I felt मैं बहुत strong हूँ, but I broke down that day. And I called my husband. I said, I don't know, what do I do? How do I care for him? He needs care like a baby. Then my mom-in-law called me. I spoke to her. मतलब मैं बोल ही नहीं पा रही थी actually. I was just so choked. It's our biggest fear. Yeah. You can't see your parents in that situation. And I remember my mother-in-law called me in half an hour and she told me that I and your father-in-law has taken a decision that आप पापा को घर ले आओगे. Like to my in-laws' house, and I was like, "Mom, are you sure?" Because it's not a common thing. We don't hear of हाँ, this, मतलब right? ये बहुत बड़ी बात है, Mom. एक बार आप सोच लो. She said, मुझे किसी से नहीं पूछना, ना मुझे कुछ सोचना है. तू मेरे घर का सेंटर है. तू खुश रहती है, तो मेरा घर खुश रहता है. And अगर you are missing from this whole family, it doesn't work out for us. So everything that makes you happy and comfortable, we will do everything. And it is your house. You don't have to think for others. And I got my dad home. And it has been the biggest blessing. You know, he's right in front of me. You know, in the morning I get up. And best of both the worlds. I mean, you can give your best time to your children, your family, your मैं हजार बार दिन में thank you बोलती हूँ इस चीज़ के लिए. When I get up. But I really, you know, I mean, I wouldn't say salute, but look up to in-laws. I mean, the generation has changed, you know. I mean, you and I may be blessed, and there's so many out there. I mean, we also have to look at the better part of them, but hats off to them as well. Hats off. भैया मैं हर रोज सुबह उठती हूँ. I'm sure आपने सब right चीजें की होंगी. I mean, you know, to have that comfort. To give you, yes, and also for them to take that big decision, because हमारी society में unfortunately अभी भी ऐसा है कि it's still like बेटा, like जब मेरी शादी हुई थी when I was married in Punjab, right? My in-laws are there, and somebody told my mother, no, oh ho, अब आपके like you know your बहू doesn't, आप तुम्हारी नूह दा तक कोई मामा नहीं हैगा, व्याह किद्दां होगा. मुझे it was like मेरा व्याह होया सी. You're not worried about. So you know, it was like, so my mother-in-law is like, so, but because they were सोच आगे थी, but still it was taken like a taboo. That, you know, oh, they don't have a brother. So like kind of looking down. But I mean anyway, hats off to you on that. And I really, you know, would respect people like in-laws who actually don't think कि हमारी duty नहीं है, or you know. But moving on, thank you for sharing that with us. I think a very valuable moment. Okay, now moving on to an ethics exam, Harpreet. बिल्कुल चश्मा वश्मा लगा लिया. यार वो पढ़ना पड़ता है ना, अब दिखता ही नहीं, हाँ थोड़ा टीचर वाला लुक भी आ जाता है. Get that since man, I really can't see. I don't know. It's okay. How do you stay true to yourself and your values as an influencer while also navigating the pressures of social media? I don't take any pressure. I'm not answerable to anyone. सबसे पहले एक ऐप है, इसे समझना पड़ेगा. ये लाइफ नहीं है, लाइफ ये है जो आपस में हम मिल रहे हैं. वो एक बहुत ब्यूटीफुल सी एप्लीकेशन है which helps us stay connected to people. That's my understanding about social media. So I don't, no pretend play.
You know, but it's amazing what you said, because Harpreet, I see people holiday जाते हैं, and it's actually, I know people and they see other people's life. अच्छा वो यहाँ गए हैं, Mauritius गए, we need to go. And they just want to go there to put pictures out there. And the pressure that they're huge putting on pressure their the family, mental, and on the mental well-being, husbands. matlab, and mental well-being, and I have seen that happen. So sometimes, and a lot of people leave it because they can't deal with it. But social media ऐसी चीज़ है, फिर My वापस आ husband is जाते हैं. not on social media. Can you believe it? I keep tagging him. I have made an account for him. He's like, I think sensible people don't need to be. he's I mean, like, of course, it's work for you. He's but it like, I can't be don't pressure. understand what is this whole thing about. So whatever he sees is also the very interesting. उसने मुझे भी आर डाल दी इन सब reels की. आपको पता है मैं किसी को follow नहीं करती Instagram पे. And if I do, so It's work. I write back. मतलब ये नहीं कि quiet story देख के निकल ली side में. No. I always reply back. Oh wow, this is so great. But I try and not follow any other influence. With no offense, मुझे लगता है कि एक तो मेरा content is true to myself है. मुझे देखना ही था कि मैं पता है लोग क्या कर रहे हैं Instagram पे, जो मैं जिसको देख रही हूँ. एक दूसरे के वही 10 लोग हैं हमारी लाइफ में जिनको हम दिखाना चाहते हैं कि हमें बहुत काम है, या हम ये जहाँ जा रहे हैं, हम ये खरीद रहे हैं, ये सब यही कर रहे हैं. मुझे नहीं करना यार. No, मुझे and also प्रेशर नहीं लेना. putting क्या खाया, breakfast, lunch, dinner. It's a lot of pressure. Like where one is gone, and I don't know if it's really worth it. And I hope the coming generation realizes It's that. not worth it. I keep telling my children this. Real, real. This Yeah. is real, this is real. Yeah. And so And the earlier we understand real versus real, so they because are हर seeing चीज़ me. is not a, yeah. So they know अगर आयत रो रही है, and I see उसके वो ना पहले कोम नहीं करती थी. I put a picture out of Ayat howling that I am dealing with this. Are there any other mothers? Can you please tell me how to make her comb her hair? She's been obsessed with her hair actually. Oh, I'm going through that. My son, he's got curls, okay? He's like 13, refusing to cut his hair. I'm like, your school doesn't say anything. I mean, of course, school tells हमारे me. टाइम पे याद है मैं तो कहूँगा, I was बाल saying, काट देते थे गुंजले बनी पड़ी, no, but you know, get me a conditioner. मैंने कहा, do you barely shampoo your hair? Every day he tells me, can we not afford a conditioner? I said, it's not affording you. So, but I My struggle. son tells me, so when I tell him that no, mama works and papa works very hard, we can't buy this. तो वो मुझे बोलता है, mama, are we rich or we are poor? So even our kids I'm very confused. but it's good. I think they need to understand, because it's very easy to get everything. I mean, they are still privileged, but yeah, I think it's important to keep them grounded. Okay, Harpreet, can you share a time when you felt vulnerable or scared to share something on social media but did it anyway? Did you ever feel? Yes, my father's time. I was very, I was scared. I didn't know what to do. Is it something to be shared or not? Because ऐसा किसी ने कभी share नहीं किया था. तो फिर मुझे लगा, this is exactly what is happening in my life right now. Why The should I most important showcase thing. Yeah. that I am very happy? I'm not happy. I'm sad. I'm crying. This is most true to me right now. और मुझे ऐसी बहुत लड़कियाँ होंगी, तो मैं उनको भी encourage देना चाह रही थी. And I finally came out with it. And coming out was, I think, the best decision I took in my career. Because मुझे समझ में आ Help so गया many है, more people. so many of us are going through the same emotional baggage. इतना guilt, with parents, ये करे नहीं करे, किसको impress करना है, ससुराल वालों को देखो या मायके को देखो, इतना कुछ चल रहा है सबके साथ. I think it was the best thing I did. So that's one thing, one time. Okay, I think that's really well answered from the heart. What's one thing you wish you could tell your audience and that you haven't shared before? And you can share it with us. ये तो सोचना पड़ेगा. मैंने क्या नहीं बताया वो मैं सोच रही हूँ. मुझे खाना बनाना नहीं आता. But I've said that कि नहीं आता यार, मुझे नहीं आता. मैं बहुत try करती हूँ. I make such bad food. Whatever little I make Maggie. मत ही पूछो, मैं Maggie. But ठीक है, I mean it's okay. You do. Because I'm that bad कि मैं Maggie भी नहीं बना सकती. मतलब मैंने बहुत try किया है. तो उसमें थोड़ा सा फर्क है. I can make little bit, just few steps maybe, but वो भी पूरा मेरे बच्चे मेरी मैगी भी नहीं खाते. Recipe I follow to the T. If I'm making something, अगर वो वाला sauce नहीं है तो I will not make it. So my mother says, can't you like try and do something else? Like वो लोग होगा अगर oregano नहीं कुछ और डाल देंगे. I said नहीं. I need the exact same thing. तो thanks to Blinkit अब वो immediately आ जाता है. So मैंने एक बार मैगी में डाल दिया सोडा, पानी की जगह. हम इटली में थे. मेरे बच्चों ने उस दिन के बाद से बोला कि it's to okay. mom's food. We are never eating anything. My son is a very good cook. I'm really working on it. I really want my son, to. He I should think it's help also a his great wife. way to get out. I mean, it really helps even otherwise. I think overall, if you're cooking, and for boys even more, I feel Very breaking the बोलते bias. तो जाएगा ना कहीं अच्छे बड़े कॉलेज से वो खाना बनाना आना चाहिए. And he loves it. And I'm very happy. So my older man's going to go to college in September. He's telling me, I think I should learn some food now. I'll learn this, that, pasta. We said, you'll be wanting Indian food. So My dal son seekh le, loves khichdi seekh le. Firangi food, and he's right now also was making ramen when I came.
Oh, wow. मैं कहा वेरी गुड एंड ही लव्स लुकिंग एट यूट्यूब. मुझे लगता है ये ना बहुत अच्छा है, ये बच्चे ना सीखते हैं ऐसे. और मैं यूट्यूब को इसलिए इतना बुरा नहीं मानती, बहुत कुछ सीखने को भी मिलता है. Yeah, it's वो just लगा about कि रहता है आप उस कैसे पे. use कर रहे हो. And I'm going to come to that social media, I mean the screen thing as well. Harpreet, as a content creator, how do you ensure that your sponsored posts and collaborations align with your personal values and audience expectations? हम करते ही नहीं है जो आप मुझे जितने मर्जी पैसे दे दो, अगर मेरे बच्चे उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, मैं उसे यूज़ नहीं कर सकती. So you're very clear on that? एक्सट्रीमली. मैंने इतने कोलैब छोड़े हैं इसलिए. मैं जब खुद ही नहीं खा रही हूँ तो ये आप झूठ लोगों को होगा अपने ना. हाँ, ये तो झूठ audience है. को आपके कैसे? बच्चे भी लाइक अगेन माय डैड सेज बच्चे सबके सांझे होते हैं, सबके बच्चे अपने बच्चे. तो फिर मैं खुद ही नहीं करी तो मैं. So it's also creating a cause. I mean, if you like what your dad says it, right? I mean, if you're keeping that in mind. मे बी कि maybe- दैट्स हाउ आई डू इट. Okay. A close friend, sorry, I have to take it out now क्योंकि खाली पढ़ने वाले, then I can't see you. So it's a very weird thing. Next I time I'll love get the other one made, जो whatever it's called. A close friend confides in you that they are, I mean, struggling with an addiction, okay? However, they ask you to keep it as a secret from their family. What would you do? I'll guide my friend only and I'll मतलब मैं उसको इतनी रील्स भेज मैं करती भी हूँ अभी अपने फ्रेंड्स को. और मेरे हस्बैंड को ही ईट्स लॉट ऑफ ब्रेड एंड आई डोंट लाइक इट. सो द अदर डे सो आई कीप सेंडिंग हिम रील्स कि ब्रेड खाने से क्या होता है. एंड द अदर डे आई सेंड हिम अ मैसेज. आई जस्ट शो इट यू. आई सेंड हिम अ मैसेज सेइंग इफ यू डोंट स्टॉप ईटिंग ब्रेड आई गो ऑन हंगर स्ट्राइक. दैट्स द मैक्स आई कैन डू बिकॉज आई लव यू. So you'll try and encourage and motivate your friend friend, to, but you won't confide. I mean, until you'll it's- let. I mean, you will be like you. Her यार trust उसने मेरे में you will कन्फाइड keep, करा है yeah, यार. हाँ, मैं so- उसका ट्रस्ट नहीं तोड़ूंगी. और हाँ अगर वो कुछ ऐसा ही कर रहा है then I'll have to get one family member involved. But right, I will be working. You will try your best कि आप ही कर पाओ. Okay. Okay. Last one. Someone posts a false and damaging rumor about you online. Okay. What would you do? Would you, confront them publicly, or will you try and resolve it privately? I don't respond to all this because I know that person who wants to do this just wants mileage out of me and I don't want to give them this pleasure. So I like to just keep. So just forget about it. Okay. So well done. You've done really well. On the मैं अपना चश्मा ये निकाल मेरे साथ हो देती चुका है by the हूँ. way. अच्छा. So and how did Someone you deal with it? So go you out. just I just kept quiet and I that just, must have irritated the person even more. Yes, that's so I knew plan ही ये है. Publicity stunt था. हाँ कि यही प्लान था कि मैं कुछ तो क्या बताऊँ यार. मैं ऑफ कैमरा टेलिंग यू शी वाज लाइक आपको लगता है हरप्रीत सूरी एक मसीहा है. आई वाज लाइक रियली पीपल थिंक ऑल दिस फॉर मी. someone did went out and I'd respond. Yeah, I These think things don't sometimes matter. if something is not important, you shouldn't even give it that मैं importance. अपना हाँ. पीस ऑफ माइंड क्यों खराब करूँ. और आई वांट टू टेल एवरीवन अगर आपकी लाइफ में ऐसा कुछ होता है इनिशियल के 2-3 दिन होते हैं जो थोड़े टफ होते हैं इमोशनली आप पर भी. बस उस वक्त को काटना है एंड यू हैव टू just engage in something else so that you don't receive it. You know, don't receive. Harpreet, I mean, you're talking about like you want your peace of mind. You said that. Coming back again to your self-care, how do you just chill, relax? We all have so much, and with women, we are very good at multitasking. वो very good के चक्कर में a lot of pressure comes on, and we take it, like bring it on. How do you like just? What is your zen? Or if I could say, what is your go-to to chill, self-care? कितना आप अपने आप को समय देते हैं? मैं I love watching movies and I love watching mindless Bollywood? movies. अच्छा, okay. बिल्कुल mindless like a Govinda movie or maybe soldiers वाली movie. मुझे बड़ा मजे आते हैं इसमें. So that is what You kind of wind down. I love it. मतलब मैं रोज रात को सोने से पहले एक मूवी लगाती हूँ. Oh wow. And my husband अब कौन सी देख रही है? And I'm like आज मैं देख रही हूँ Soldier. A soldier is never on holiday. So no like high pressure movie, but just to chill. मतलब something बिल्कुल which दिमाग relaxes ना you, लगे हाँ, मेरा. where you can और switch जहाँ off. मुझे लड़ाई दिखती है वहाँ मैं उसको फॉरवर्ड कर देती हूँ. हाँ. And I just want to see the good part of it. And no nothing emotional, nothing too taxing. मैं कोई शो नहीं देखती नेटफ्लिक्स पे. जैसे भी एडोलसेंस आया है मुझे वो भी नहीं देखना. हाँ, You मैं भी आया था I मुझे want- वो भी no, नहीं but I देखना. want to मुझे watch it, देखना ही but, नहीं. मेरे को स्ट्रेस इतना हो रहा है कि देखूंगी तो पता है, everything will be. एक बात ना मेरी मॉम इन लॉ ने मुझे बहुत बच्चों में सिखाई थी when my kids were growing up. भोले भाव. सब कुछ भोले भाव से करना चाहिए. चंड चलाक नहीं बनना. भोले भाव से करो. Clear तो heart. मैं बड़ी भोले भाव चीजें करती हूँ. मुझे लगता है मुझे जानना ही नहीं है. मुझे जानना ही नहीं है. मतलब सबके पल के मेरे भी पल जाएंगे. You know, I like know that. exactly. So I'm also like, I'll see. Baby, like, you've not seen it, like your मुझे child. मुझे Yeah. बहुत लोग बोलते तूने ये my friends tell me there are so many of these series. You are an influencer. You don't know. I said I don't need to know. Yeah. Why should I And you have take enough that stress on me? I don't want it. And you have enough
on your plate. I mean, each to one of us going have to. on. Yeah, to I see like rather listening to elders and उनके advices. मुझे लगता है इनसे सीख लो. मुझे नहीं सीखना है टीवी सीरियल से. पीछे You आया था, my friends were going crazy over You, और मैंने वो भी नहीं देखा है. Squid Game. मैंने आज तक नहीं देखा. मुझे देखना ही नहीं है. मुझे जानना ही नहीं है उसमें क्या हो रहा है. मतलब too much stress, like just seeing all that. It I like kind of Dhoom 3. upsets me. मेरी favorite movie है Dhoom 3 दिखा लो मुझे. मुझे ऐसी movies अपनी So you Bollywood know what you enjoy, you watch that, and that's how you wind down, or that's how you okay. अब आप बात कर रहे थे आपको मूवी पसंद है, but as a mother, and I struggle with it, screen time आप बच्चों का कैसे कंट्रोल करते हैं? मैंने और क्योंकि आपका काम फोन पे बहुत है, so my obviously kids they are see seeing you do that, and as parents we should be role models and blah blah blah. How do you deal with it? मैं अपने बच्चों को बहुत क्लियरली बताती हूँ कि ये जो फ़ोन है ये एक लैपटॉप है, मैं इस पे काम कर रही हूँ. अब ना जैसे अब मैं मम्मा ऑफिस जाके काम कर सकती थी और आपको बिल्कुल नहीं देखती, यू नो आप घर पे अकेले होते, पर मम्मा अपना ऑफिस घर ले आई हैं, तो दिस इज तो विल बी विद मी बेटा. In your jobs, whatever you like, my husband is a carpenter. मतलब he's into interiors. I call him a carpenter. I said पापा के हाथ में सारा टाइम उनके औजार रहते हैं, वो उनका काम है. So clearly ये it's not an addiction for me. It's my workspace. मैंने अपनी बेटी को ज़बरदस्ती अब टीवी दिखाना शुरू किया है. उसे शौक ही नहीं है टीवी का. What does she like to do? फिर क्या She loves art. Oh, She's that's so so creative. fond. Yeah, she's so fond of making something. And my son likes breaking things, which means वो Typical अपनी girl. गाड़ी तोड़ेगा फिर उसको जोड़ना शुरू कर देता है. Lego, उसको ये बहुत वो, शौक है. हाँ. एंड माई डॉटर वो उसको कुछ भी दे दो ना, वो कुछ भी बनाती रहेगी उसके साथ. वो कभी नेकलेस बना लेगी, उसको बहुत शौक है इन चीज़ों का. मैं अपनी बेटी को विथ ऑन माई दीदीज फ़ोन मैं रील्स भेजती हूँ कि ये देखो, क्योंकि वो जब वो जंक फूड खाती है तो मैं अपने पूरे घर में लोगों को रील्स भेजती हूँ. नहीं, reels when I love sending because I feel, and where I send it from I don't think we need to get into the details, but there is a lot of interesting There's a stuff lot out of there. knowledge. यार अपने बेटे को मैं इमोशनल वाली भेजती हूँ सारी, अपनी बेटी को जंक फूड पे भेजती हूँ, अपने हस्बैंड को ब्रेड के लिए भेजती हूँ, अपनी so you मॉम have- को किचन के लिए भेजती हूँ. So सबके अलग अलग. हाँ, सबके. किचन वाला तो when I have a group nice recipes, I send it to my cook also कि आज ये बनाओ. आज ये बनाओ. So yesterday we had an event and middle of that he's calling me. He's like, भाभी जी तो उठानी नहीं, messaging on WhatsApp. भाभी जी dinner में क्या बनाना है? And there were like these 5 women at I go NDTV through we have a this. lot of women, right? It's मैं so- ना मैं कहीं अवार्ड भी ले रही होंगी ना, अगर शाम के 6 बज रहे हैं तो मैं dinner में क्या बना है? I think that's something we all deal with. I'm like okay, ऐसे मम्मा से पूछ ली. मम्मा कह रही भाभी को I like eating non-veg. So मम्मा says कि भाभी मम्मा is a vegetarian. कि आप भाभी से पूछ लो. Then he keep calling. उसको क्या फर्क पड़ रहा है, भाभी को अवार्ड मिल रहा है, भाभी शो में They he doesn't don't, care. yeah. And it's so innocent and they're so, I mean, Because they're doing diligent. their job. And it's diligent, right? I mean, कि फिर भी फोन करा, I said just ask the kids, जो बनाना है बना दो, I मुझे can't बहुत tell लोग you. ना ये बोलते हैं कि जैसे some of my influencer friends, we were traveling somewhere and I was with the cab guys and I'm very patient with them. वो रास्ता नहीं मिला, मैं ऐसे समझाती हूँ, हाँ जी आपने राइट ले लिया, हाँ जी. So my team, my friends tell me कि ये गुरु ज्ञान की ये कहाँ से आती है इतनी ये शांति तुम में. और मैं उनको हमेशा बोलती हूँ कि तुम्हें पता है उसका दिन कैसा था, उसके घर में किससे लड़ाई हुई है. मैं अगर थोड़ा मीठा बोल लूँगी, सेम इज माई कुक, सेम इज माई स्टाफ, थोड़ा मीठा बोल लो यार, वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं We आपसे. have to look at the best at everybody. I think so many of our things, I mean, we've connected because I think we believe in a lot of things which are same, Harpreet. Because because we have to see what that, आप सब किसी में हर में कुछ अच्छाई होती है, to just look for that in that person. Yeah. अच्छा, अगर मैं आपसे एक पूछूं, actually that will be your last question, maybe one of your last questions. Okay, I have a rapid fire. We don't have a hamper, but still. Yeah. One parenting hack you swear by. I don't understand this word called allow. I feel सब में एक सांस है और सबको डिसीजन मेकिंग पावर होनी चाहिए, तो मेरे बच्चे अपने लिए डिसाइड करते हैं. So it's no कि मम्मा से पूछो, पापा से पूछो, take your own decision. And the earlier they do it, better for them. Okay. Favorite mom-friendly fashion trend? मॉम फ्रेंडली पता नहीं यार, मैं तो सब कुछ पहनती हूँ मॉम फ्रेंडली. So everything. I mean, anything you wear or anything you carry off, where मैंने is a पीछे एक fashion trend. स्टोरी की थी कि मैं थोड़े रिवीलिंग कपड़े नहीं पहनती हूँ ना, बिकॉज इट डजंट वर्क फॉर मी. मुझे लगता है कि आई डोंट वांट मेन लुकिंग एट मी, आई एम अनकंफर्टेबल. आई डोंट नो, सो आई लाइक मोर कवर्ड. I mean, yeah, you don't want. Okay, perfect. Giving the right, I think. I mean, yeah, it also comes across like that what you're wearing. Totally right? signal. I agree with man, that. Yeah. man know it. Okay, so Harpreet, tell me your go-to spontaneous date night idea. So my office, whenever I win something, I was the other day trying to see my photos with my husband कि कुछ है, मुझे एक post डालनी थी. So all that I saw was that I am removing my hair clips from an award show or something or a event I've gone to, and he's pouring the drink. So this, I think, my office. हम लोग पीछे जाके. So that's your go-to place and spend time. You're like. And Kunal likes me with him completely. He always says when we go out publicly, people are coming and meeting you, pictures. I don't get to talk to you. So he likes it very, very private. So the private time, the two of you, okay, together.
Okay, best advice for embracing the chaos of motherhood. Because so many women, like you said, इतना कुछ हो रहा होता है. So what advice would you like to give? हम सबके साथ ही हो रहा है ये मैं अकेली या आप अकेले नहीं हो तो मुझे समझ नहीं आता हम इसको इतना बड़ा क्यों बनाते हैं मुझे तो नहीं लगता बिल्कुल मुझे Part of our lives. ये ऐसा ही रहेगा और ये सबके मेरी मॉम इन लॉ के साथ था उनकी मॉम के साथ सबके साथ ये जनरेशन से चल रहा है और ये ऐसा इसको एम्ब्रेस कर लो It's just that how you manage it, I think, again. Okay, Harpreet, one self-care ritual you prioritize. Don't say movies again. मुझे ना सैलून जाना बहुत अच्छा लगता है I can see the hair, lovely hair, blow every now dried. I'm everything getting comes envious. home बट मुझे फिर भी सैलून जाना बहुत अच्छा लगता है लाइक आई लव इट एंड आई लव Pampering yourself. मुझे बहुत अच्छा लगता है और मैं सबको बोलती हूँ करना चाहिए तो 2 घंटे मिले जस्ट गो आउट डू योर नेल्स Yeah. व्हाई नॉट व्हाई Yeah. दुखी होके क्यों रहना यार इतनी ब्यूटीफुल लाइफ है इतना भगवान ने आपको एक एक अंग दिया है अच्छा उसको सजाओ यार Very well answered, actually, that one. Most memorable mom fail moment. Have you ever felt as a mom ki... Yeah. Oh God, I once missed my son's bus. School And bus. I felt I'm the worst mother on this earth, Mother Earth, and I cried Oh my- and I failed. But that was my changing moment, actually, my life changing for me. I called my husband and said, I've done this, Prana and Dhimkan. I was crying and he's like, वापस स्कूल चला जाएगा यार वहाँ से पिक कर लेंगे क्या अगले बस स्टॉप से ले लियो व्हाट्स रॉन्ग विद यू एंड दैट्स व्हेन आई फेल्ट दैट What's the big deal? व्हाट्स अ बिग डील तो मैंने ना अपने ऑफिस में ना ऐसे एक सिटी वॉक में एक पेज पे लिखा आई एम नॉट अ परफेक्ट मॉम आई एम नॉट अ परफेक्ट डॉटर नॉट अ परफेक्ट डॉटर इन लॉ नॉट अ परफेक्ट वाइफ एंड आई जस्ट स्टक इट देयर और रोज देखती थी कि हाँ ये परफेक्ट बनना है यार मुझे समझ में आ गया उस दिन ओह इतना परफेक्ट नहीं बनना यार वी ऑल हैव फॉलीज एंड इट्स फाइन टू एम्ब्रेस इट I just love your attitude. Honestly, it's so real. No, I mean, honestly, favorite parenting book or podcast? खुद ही आप- मैं दोनों ही नहीं पढ़ती मैं बड़ों से एडवाइस लेती हूँ मेरे इन लॉ से और मेरे डैड से So the real people, like you've been saying. जिनके पास एक्सपीरियंस है बहुत सारा Dream family vacation destination. यार आजकल तो सिंगापुर चल रहा है क्योंकि मैं हर तीसरे महीने सिंगापुर से इनवाइटेड होती हूँ आई एम गेटिंग एन अवार्ड आल्सो फ्रॉम Oh wow. दैट इज लीडरशिप एंड मेंटोरशिप अवार्ड्स हैपनिंग एंड उसके लिए मुझे नॉमिनेट किया गया और मैं फाइनली वो जीत भी गई हूँ 15 women across the Asian countries are receiving this and I'm one of them. It's my first international. Congratulations. Thank you. तो आजकल तो सिंगापुर चल रहा है because there's so much to do. And you know? also take your children. I've also seen like you took your All the daughter time. पीछे वो Disney. Yeah. Until my children were 4, I didn't travel with them. My mother-in-law had told me again. My mom said कि तुम नहीं travel करोगी ये रोएंगे धोएंगे nappy ये सब खाना पीना तुम क्यों करना है मैं हूँ ना मैं देख लूँगी तुम दोनों जाओ. After they turned 4 and a half, I started taking my children. Yeah, and that's when they enjoy. To be honest, I think we've also done that. Certain places you feel, but then you feel, yeah. I mean, it's a And a they torture have for that, them, you know, honestly. Yeah. हाँ ये कोई भी खुश नहीं हो रहा है पति अपना परेशान है बीवी अपना बच्चे अपना रो रहे उनको खाने में क्या खिलाना है वो lunch नहीं खाया No, dinner. Yeah, it's a lot of stress. So Singapore is something that Okay, I love. one thing, Harpreet, you wish you knew before becoming a mom. Like something if you think you He, would have. I didn't have great time with feeding. I wish I Oh my knew. God, same. I've had a torturous time. Yeah, same. Torturous You time. won't believe it, actually, same. And I came out of the, so my older one was born on New Year's, 1st of Jan, and I come out and I'm like, should I press the button? And they're like, हमने ऐसे कोई नहीं देखा, normal delivery, you're totally fine. I said, yeah. The torture started, and I was like, no, and I talk so much about it. I've done so much on breastfeeding, lactating, so many stories. I'm like, nobody tells you the real problem. Because the kid happens, that happens वो 1-2 आपको घंटे. पता है मेरा एक बच्चा लैक्टोज इंटॉलरेंस था एक बच्चा प्रोटीन इंटॉलरेंट था I got a lot of flack from people because people didn't understand all this. They said इसको दूध नहीं पिलाना चाहती है, that's why she's doing this. She wants to go back to her career. That's why she's, giving all these answers. I said, are you guys for real? And I remember with first one, so I tortured Arhan and I got tortured myself. My son actually lost weight in the first few weeks because there's no way you can measure, na? So you don't know how much milk the child is having. And it was the most, I mean, when you said it and we're talking about it, of course, on national, I mean, on a platform like NDTV, but it's a fact and I think so many people... real life situation And nobody explains, मतलब कुछ इसकी counseling नहीं होती, ये बताया जाता है कि बच्चा होगा, ये होगा, but feeding कैसे करनी is not just taught. मुझे इतना मिल्क आता था इतना तो what I first वाले में मैं dogs को पिलाती थी अरहान तो पी नहीं पा रहा था because he's second lactose, time में I started donating it I didn't know what to do with that milk Now they have these milk banks as well. with so Aya they time they had so I did that So you were in Delhi and you luckily could do that. A lot of times people first don't time know what dogs to do. पीते थे यार can you believe because अच्छा, first time, हाँ, okay, people's pressure was so much on me कि She doesn't want to. Yeah, that is so again. then like how- I used to milk and I used to give it to the dogs
And that's when, again, my mother-in-law, she's the progressive lady. She told me, shut this. Injection लगवाओ, बंद करो, क्या torture And है? if your child can't have it, then what's the point? I और mean, you're not. dog किस तुम कर रही हो ये chuck it. मतलब I remember in my second one, I remember I could not feed Ayat. मतलब it became torturous. वो भी नहीं पी रही थी, उसको protein allergy I थी. used to actually fear when the kid used to come near me for the first one. Second one, you can understand. So I think we went through it. Yeah. I remember I told after a month, I told my husband, I said, I can't deal with this. This is I nearly had to go for a surgery. मुझे panic It was attacks that हुए. extreme. Oh. So it had actually become a abscess and cyst. So when people say that, I mean, what you answered, actually, I went back to 18 years. That is the main thing, क्योंकि कोई इसके बारे में बोलता नहीं. और कोई समझता भी नहीं है. I told my husband, he said, shut it now. I said, मैं मम्मी से और पूछूंगी एक बार, I want her advice. And I told I was so scared telling her, because वो बोलेंगी फिर से इसको कोई problem है. She was like, why are you asking me? It's You your are the choice. mother, it's your decision. Yeah. That's what I do with my children. It's your decision. Yeah, and make the right. And kabhi, see, we've all made, there are lessons. I think mistakes are You never learn. called mistakes. Yeah. So I guide them, but decision But is see, yours. rapid fire was fun. Though I thought I want to ask you, it was between the rapid fire, but I want to ask you quickly because I think you'll be fun with this. Heels or flats? Flats. Okay. Shoes actually. Bold lip colors or natural makeup? Bold यार, I मुझे love पता है, bright lip colors. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं. Designer brands or high street fashion? A mix of both. I love luxury. I feel मैंने इस पे post भी करी है. I have built myself to buy this. So why not? Okay. Long hair or short hair? मेरे तो मीडियम है. मैं बहुत फैसिनेटेड थी लॉन्ग हेयर से, तो मुझे फिर लोगों ने बोलना शुरू किया, आप शहनाज हुसैन जैसे लगते हो. फिर मैंने काट लिए. So, and are you ever going to go short? I like the way she's like, our camera's capturing you. I from your love wrist. her, Yeah. but yeah, you have it's your not my own- persona. yeah, इतने personality, लंबे बाल थे yeah. मेरे. Oh wow, I've never seen you that long hair. So before you, after you got that compliment. Everybody started saying it to Yeah. me. I said, okay, let me just cut them. No, but this lens suits you. Anyway, beach vacation or mountain retreat? Beach. I've discovered the joy of beach with my daughter. I never knew. I used to run away from beaches कि मेरे बाल खराब हो जाएंगे. और मैं ऐसी हजारों लड़कियों को जानती हूँ जिनकी सेम थॉट है, but I've realized let loose. So enjoy the beach. Yeah. Pizza or sushi? Sushi. Morning person or night owl? Night owl. Phone call or text message? Voice notes. Okay, that's advanced. I haven't really. मैं got सिर्फ there. voice notes. I मुझे haven't समझ got नहीं there, आती by क्या. the way. Okay, schedule play dates or spontaneous adventures? Spontaneous adventure. मेरे साथ बहुत schedule करना पड़ता है, but I just take my kids out like this. Let's just go. चाहे मुझे कोई फर्क पड़ता, सुबह स्कूल है, हम भी सुबह उठ जाते थे और चले जाते थे. I tell them सुबह उठ जाना. That I agree. बस सुबह उठ जाना, बाकी दिन में सब क्या 8 पापा को पटा लूंगी. Okay, homemade meals or store-bought snacks? Homemade meals or snacks bought from a store? No, homemade. So totally homemade, like घर का खाना. Co-sleeping or separate bedrooms? Co-sleeping. That's a मैं new तो trend. बच्चों को भी ले आओ, मतलब मम्मा पापा को भी ले आओ, सभी को इकट्ठे ले आओ. When I was But you know, separate bedrooms is a very new lat. trend. Yeah. Whenever I fight with my husband, I tell him, let's do lat. And he's like, what is What lat? is lat? Lat is living apart together. जब मेरा Yeah, झगड़ा yeah. होता है So ना. loos, I know a lot of people have separate loos. Lose is I don't know what it's called, but they have separate, like the wardrobes and the toilets are separate. But so, yeah, that's also like a new thing. They're like, oh, you guys have one bathroom or two, and I'm like, one, like whatever. They're like, oh my god, you need to get 2 bathrooms. Life is so much easier. So that's something. मैंने लैट सुना है और मैं कुणाल को जब भी झगड़ा होता है बोल देती हूँ लैट कर लूँ. पर वो तो झगड़े के टाइम है ना. बस it's वो कहते तो ट्राई तो कर. I need that hug before I sleep. जितना मर्जी लड़ लो, I need the that touch, the physical, yeah. Okay, strict routine or flexible? I don't think I need to ask you that. Flexible. Okay, lastly, Harpreet, I want to ask you, how has, I know we've spoken so much, and I think pata hi nahi laga how, you know, time has just gone by. How much or how has motherhood changed you? I mean, an excellent daughter, an excellent daughter-in-law, today, touch wood, your career. I mean, everything's perfect, right? Let me put it that way. But motherhood ने वो आपको ऐसी क्या चीज़ है जो सिखाई है which nothing else would have taught you? Patience. That's one thing I think I've mastered it now. मतलब कई बार मुझे बताना पड़ता है मेरी टीम को कि जागो मोहन प्यारे रिएक्ट करना है इस पे. और I'm like, वो बच्चा है यार, उसको तो ना वो तो ना जानबूझ के कर रहा है, उसको यही करना आता है. So I think patience आ गई मुझ में बहुत ज़्यादा. पहले भी थी पर अब So तो ठहराव, I mean, let me put a patience, yeah. Okay, you know, a message for our viewers, because बहुत बार life में we want something to happen, it doesn't happen, and like you said, जब होना होता है तभी होगा, something better will happen, like let serendipity happen. A message you would like to give our viewers who are watching us, that it's okay. I mean, what message would you like to give about unplanned life, about that let things happen when they have to happen, and it's okay that everything is not okay. So what would you like to tell us about that? मैं अपनी लाइफ जैसे जीती हूँ मैं वो बता देती हूँ कि हर चीज़ का एक पर्पस है. भगवान हमें जो दे रहा है उसका भी पर्पस है और जो नहीं मिल रहा है उसका भी एक पर्पस है. सो व्हाट कम्स टू यू, fold hands and take it, and what doesn't come to you
उसके लिए डबल शुक्रिया है कि भाई पता नहीं वो मेरे लिए अच्छा था भी कि नहीं था। मैं ऐसे ही सोचती हूँ। और जब सरेंडर करते हो, हम कहते हैं हमने सरेंडर कर दिया, हम करते नहीं हैं। हम तब भी उम्मीद रखते हैं कि इस सिचुएशन को मैं कंट्रोल कर लूँ। सो इफ़ आई से आई हैव सरेंडर्ड, आई हैव फुली सरेंडर्ड टू माई गुरु, लाइक आई जस्ट सरेंडर्ड। ही नोज बेस्ट। अब वो आप भगवान बोलो, यूनिवर्स बोलो, एनर्जी बोलो, वो जो भी है, that is guiding you. Then just let that thing guide you. I think that's beautifully said, but just true, just let it happen naturally. Let it flow. सब कुछ एंड में ना सब इकट्ठा हो जाता है. हाँ, and I think like you said, बहुत बार हम we don't let go कि क्यों नहीं हुआ, but जो आपने बोला ना second कि बस let it happen and just let it be. But yeah, thank you so much, Harpreet. It's been such a pleasure to have you with us, and thanks so much once again.